kind of a single interpretation that you are giving. There's no much interpretation you are giving. But if I say to you, now if I share with you my another screen, and look over here, there is something called as, if you see, this is Dr. Reddy's, this is Aurobindo, Sun Pharma, Divi's, and Cipla. Okay. Now this is what you see. Let's take Cipla ka example. If you see over here, there's something called as given to you. What you will see over here is that March 24, the total sales this company has made is 16,574 crore. I hope and I expect that you all are able to see. And the total sales you are coming in now, you see, the sales turnover is operating income is actual sales is how much, but it is 14,441. And what is other operating dividends income received? 2,133. Now, if you are a person who is into businesses, would you be interested in taking this wala part, or you would be more interested in taking the sales wala part? There is a total income which is coming of 17,903 crore. And here if you see, there is something called, इसमें से कौन सा sales उठाना है मेरे को मेरे operating income देखने के लिए. Will I be more concerned with this 2,133 crore? Either yes or either no. मेरे लिए क्या important है? सत्यम, what is the more important part for you? तो जो नीचे वाला जो सेल्स बोले थे ना वो वाला। आप 14,441 करोड़ लोगे कि आप 16,574 करोड़ लोगे? ये आपका सेल्स है. मैं कुछ चीजों को 14,000। मैं ट्राई करता हूँ to hide it so that it is easy for you all to see. देख लो 14,4441 करोड़ 0.14 करके आ रहा है तुम्हारा. और उसके बाद तुम्हारे पास आ रहा है रॉ मटेरियल. अब रॉ मटेरियल में भी एक प्लस साइन था बट वो कुछ दिया नहीं है उसमें. सो रॉ मटेरियल है, फिर एम्प्लॉय कॉस्ट है. एम्प्लॉय कॉस्ट में सैलरीज एंड वेजेस है 241. एट अब व्हाट आर इट्स देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ इट. इनको मैं रेशियोज में अगर डाल दूं तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ रेशियोज में मैं नीचे जा नहीं सकता क्योंकि बहुत कम से कम 500 रोज बनाई हुई है और कॉलम्स तक जाना पड़ेगा. तो उससे अच्छा मैं सिंपल सा यहाँ पे ही तुमको बता सकता हूँ कि 14,441 है विच इज योर सेल्स एंड योर रॉ मटेरियल इज 4,977 crore. Let's assume that way, which means that can I say my gross profit? If I have to, I'm not taking another thing. I'm just going to my Word document. The sales was 14,441 crore. Your raw material cost is somewhere around 4977 crore. 4977 crore. So in a way, can I say my cost is equal to or percent of RM to revenue equals to how much? 4977 divided by 1,441 multiplied by 100. Kitna aaya? Can somebody please do it for me and give me the answer? 4977 divided by 34.4%. 34.4% is your
is the percentage coming? 34.4%. Omkar ने बता दिया. It's coming to 34.4%. Which means in a way, if I have to give very simple, out of 100, GP percent would be equal to 100 minus 34.4%. Just assuming, I'm just taking it. 100 minus 34.4% comes to 65.6, if I'm not wrong. 65.6%. And this is for the year 2014. This is for 2014, if you see, which means that your top line profits are coming to 65.6 percentage. This is your top line profit. 2000, not 14, sorry, it is 2024. So similarly, if I ask you that, okay, calculate for me for 2013 also, you can do it. The only thing is that you need to know the numbers of it. The same thing का numbers में दे देता हूँ. Just see for 2023. The numbers are there. The sales, that is sales from the business is 13,073 crore. 13,073.53. I'll make it as 13,074. Let me make it as 13,074. Sale 13,074. The raw material was in that year, the raw material was 4,739.89. I make it as 4,740. I'll make it as 4,740. Can you get me the percentage of raw material over here then? Percent of raw material equal to 4,740 divided by 13074 multiplied by 100. How much percentage it's coming to? I know I can do these things in Excel, but just want to give you a very basic part of 36.25. 36.6, 25. 36.25 आ रहा है हम्म, पक्का? 36.25 आ रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो परसेंट ऑफ जीपी परसेंट क्या होगा? GP percent will be equal to how much? 63.75, if I'm not wrong. 63.75%. लास्ट 2024 में क्या था? 65.6 आया. मतलब इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है परसेंटेज प्रॉफिट्स में? इफ आई मेक अ काइंड ऑफ, चलो इफ आई गिव यू अ काइंड ऑफ इंसर्ट कॉलम डाल देता हूं यहाँ पर. सो आई विल से year 2024, 2023, 2022. Sales, we said 14,001, 13,074, 13,074 of raw material, 4740. इधर रॉ मटेरियल का था 4977. 4977. Similarly, I can just check what has happened with my 2022. 15053. 15053. And my is coming at 647, 6468. 6468. 6468. So what's my GP coming over here? You can do this way also. Just take a look at this. This is one part. Just if you minus it, your GP will come and you will get the percentages also. I'm sharing my Word file if I'm not wrong, Omkar. Sharing my Word file Yes, only. can see your Excel book. You're seeing my Excel? Okay, then I will share my Word file.
Now look at your sales raw material GP. And you can get your percentages over here. उन सबका percentages यहाँ पे आया. Now what happens is you all said that sir, my raw material percentage to my sales is 60. It's 34.4%. This is 34.4. So this becomes 65.6. 65.6. This was 63.75. And this was 36.25. Can I get for 2022 also similarly? How much it will come to? 2022, please. The figures are in front of you. 15,053, 6468. So 42.97. 42.97. And so how much this would be? 100 में से 42.97 minus कर दो. It would be 60, 58, 57.03. If I'm not wrong. 57.03. Okay, cool. What is it giving you? Any kind of clear indications you are getting? What is happening? It's giving you a very difficult time of a difficult understanding about a particular company. That's what ratio does. You won't know. No increasing GP. GP is not increasing. It's confusing. No. Yeah, GP is increasing because the cost was higher at that point of time. So GP is increasing, but obvious 57.03, 63.75, 65.6% higher. So that way you come to know that this company's profitability is increasing, sir. Now, if you want to do, so this is what happened portfolio managers. What does portfolio managers does? And in such a market where we are, if you see, once the budget was announced on 1st of February, there was a huge kind of a great thing happening for consumption stock. Everything will rise. Everything will be great. We know what has happened in past 1 month. 1st February से लेके 28th of February, the market has lost nearly how much फेरिन फेरिन ने आज सवेरे ही डाला है ना दोपहर को कितना लाख एफआई निकाल के चले गए इस देश से जाने दो, अभी क्या ही बात करें। अरे 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 बड़ा तकलीफ हो गया तुझे तो बहुत सारा पैसा निकाल के एफआईआई चला गया है यहाँ से और एफआईआई चले गया उसका एक पीछे तो क्या हो गया सारे जितने भी बड़े बड़े पंडित थे जितने भी विशेषज्ञ थे वो सब धरे के धरे रह गए बर्बाद हो गए हिंदुस्तान इज ओवर डन फिनिश Modi ji should resign. He should start doing what campaign? Should Modi ji resign? No, that's not what the market is. वो तो वैलेंटाइन डे से ही दिख रहा है जिस दिन से वैलेंटाइन डे हुआ है तब से लाल ही दिख रहा है भाई उसके बाद से कभी हरा हुआ ही नहीं है मतलब उम्मीद की किरण भी नहीं दिख रही है उसमें But what is going on? What is this outflow? What is this outburst? Is it an anger? Is it a problem? And at the same time, Shanghai market is doing great. Hang Seng market is doing superb. जबकि उनके ऊपर ही सबसे ज्यादा टैरिफ लगने वाले हैं. Now people will start saying कि it is all Trump वाला thing because he is putting tariff. अरे जिन कंट्रीज पे टैरिफ सबसे ज्यादा लगाने वाले हैं वो तो कंट्री ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं. बराबर उमेश सर तो ये कैसा कौन सा फंडा लगाया चाइना बिहेवियरल फाइनेंस पढ़ रहे हो ना तुम लोग राइट और रॉन्ग हाँ, सत्यम बिहेवियरल फाइनेंस में क्या होना चाहिए था सर सर ये तो विपरीत हो रहा है ना कि उल्टा हो रहा है। बिहेवियरल फाइनेंस ये बोल रहा है कि ह्यूरिस्टिक्स लोग उसी तरफ भागते हैं जिस तरफ वो सुनते हैं जिसको हम बोलते हैं हर्ड मेंटालिटी लेकिन सर ये कौन सा टाइप का दिमाग लग रहा है लोगों का साइकोलॉजी लग रही है कि चाइना पे सबसे ज्यादा टैरिफ आने वाले हैं और चाइना की मार्केट बढ़ रही है लेकिन हमारी मार्केट कम होती जा रही है ऐसे कैसे तो टैरिफ तो चाइना पे लगेगा तो प्रॉब्लम वहीं से होगी ना उनका माल यूएस में आने के लिए अब उनको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा टैरिफ्स जो पहले वो 10% या 12% या 15% दे रहे थे अब उनका एवरेज टैरिफ 25% हो जाने वाला है तो ये कौन सा मतलब मैं क्या इस फाइनेंस को कैसे समझू सर कौन से फाइनेंस को समझू ये राइट दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड
This is what that all the markets people are leaving, all the FIs are leaving. I was reading DeepSeek ने अपना एक छोटा सा चैटबॉट निकाला एंड द स्टॉक हैज रन फ्रॉम 10th जनवरी ऑनवर्ड्स. मैंने सिर्फ उसका कहीं पे सुना, शायद से इंस्टा रील पे ही कहीं पे सुना. 27% का रिटर्न दे चुका है. 27% इन जस्ट लास्ट 1.5 months. और ऐसा कौन सा बिजनेस आ गया भाई जिसकी वजह से इतना बड़ा आ रहा है इसको. सर उनका कॉस्ट बहुत कम है ना कॉस्ट तो रन करने का. एक्चुअली कम है. वो तो बिकॉज 10 टाइम्स. they are reduced by 10 times of GPUs और वो टेक्निकलिटीज है. लेकिन द कॉस्ट कम होने से पैसा थोड़ी आ रहा है. इंडिया में चल नहीं रहा है. सिंपल सा मैं लॉजिक दे रहा हूँ. इंडिया में आईफोन पे डीप सीक चल नहीं रहा है. यूएस ने उसके ऊपर बैन लगा दिया है. ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी चाइना से नाराज बैठा है. तो आप क्यों? कौन सी मार्केट में बेच रहे हो? ऑस्ट्रेलिया इसके लिए नाराज बैठा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टुवर्ड्स चाइनीज गुड्स. because they do not allow because their goods are not getting sold in Chinese market. मतलब फिर ऑस्ट्रेलिया को जाना पड़ता है हांगकांग के रूट से, जिसकी वजह से हांगकांग का मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज यू डोंट गेट डायरेक्ट एंट्री इनटू चाइनीज मार्केट. चाइनीज मार्केट आर controlled by their nationals only. That is the problem, and that is why Australia says that if you want to be on level playing field, then also give us that same opportunity. जो शायद से बाकी वर्ल्ड नहीं बोलता था कभी. अच्छा. तू मेरे यहाँ पे बेचेगा लेकिन मैं तेरे यहाँ पे नहीं बेचूंगा, ये कौन सा बात हो गया भाई? सो गलत. दैट इज व्हाट. सो मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाह रहा हूँ. आई डोंट वांट टू एंटर इनटू दैट पॉलिटिक्स पार्ट, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट लॉजिक दैट अब मेरे को सिखाया जा रहा है रेशियोज, तो मैं क्या अंडरस्टैंड करूँ? जैसे रेशियोज बहुत सारी चीजें बोलते हैं और वी कैन इट्स लाइक यू ऑल हैव लर्नड इन योर 10th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री को साइन कॉस को समझने के लिए देयर आर लॉट ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डूइंग फॉर्मूलाज. Can keep on doing formulas after formulas after formulas, and you can keep on getting the answers for your questions. So like quadratic equation, जब कुछ भी नहीं समझता है, आज तक x की वैल्यू पता नहीं चली लेकिन फिर भी हम कर रहे थे, बट फिर x फाइनली जाके कहीं ना कहीं पे मिल गया हमको. राइट ओमकार? सो वी केप्ट ऑन डूइंग इट, वी केप्ट ऑन डूइंग इट, बट देन वी गॉट द x का वैल्यू. वैसे ही होता है विथ रिगार्ड्स टू आवर रेशियोज ऑल्सो. Unearthing those ratios mein, we understand that what are these numbers trying to teach us. These numbers are trying to teach us, okay, 57.03 is my top line profit. मतलब क्या कि मेरा 42 रुपीस का खर्चा है मेरे रॉ मटेरियल पे. इसी के साथ if I add my employee cost, what will happen? So if I take employee cost, what will happen? Employee cost based on my sales. So if I say, are you all able to see the Excel file now? एक्सेल फाइल दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं. नहीं दिख रहा है? एक सेकंड में दिखा, छोड़ करता हूँ. जस्ट अ सेकंड. I can go endlessly on talking about this wala part. I'm not going to give all the things, but uh, just take for example now, if I say, one second, huh? मतलब भूल जाते हो तुमका. क्या भूल जाते? नहीं सर, आपको नहीं बोला था, मुझे लगा म्यूट है. Okay. Similarly, if I want to take now the total payment to employees, this is 2644.21. If I take this 2644.21 divided by 2644.21 divided by, I'll say 14.
4 bracket close multiplied by 100. It's coming to 18%. एक सेकंड ना सॉरी यार 18.310, and this is total payment to employees. Means what is your amount after adjusting everything? What is the amount that you're paying to your employees? This is what we want to calculate. Now, so as we try to understand that what is my employee cost over a period of 5 years, I'm going to look into that area that for 5 years में मेरा employee cost क्या हो रहा है? What is happening to my employee cost? I made it in yellow. I hope it is visible. Now just imagine over here that equal to, if I do this divided by my actual sales, only sales, no other things added on it, multiplied by 100. So this was 17%. Over here in 2022, 2122 divided by 150.52 bracket close multiplied by 100, 14.09. 1703 divided by 11060 multiplied by 100, 15.0, 15.402. So what is happening? What is happening with this? $14.909, 17.865, 18.312, 3102, which means that my employee cost over the past 3 years has been increasing. In March 2022, it was lower, but then over a period of time, it has again started increasing my payment to employees. This note is in employee cost increasing. Why it is a worry? I mean, Times of India doesn't need to cover that. What is the employee? What is of? I mean, or Times of India ka one page of around approximate size of a quarter page was dedicated that Infosys gives 6 to 8% paychecks rise to its employees. I mean, is that a kind of a first page story that you will cover? You are basically a you are basically a finance. If I ask for your ad, you will charge me a bomb in your newspaper, but here you're giving it on a front page news that Infosys is going to roll out this kind of checks only with 6 to 8% rise. Why is that becoming such an important thing? Because this is where companies are now seeing that there's a lot of pain points for them with regards to employee cost being there. And that is why previously what used to happen, those who have done accountancy like Ferrin or Umesh or Preetham or Drishti or Regency, Devanshi, these are all accounting students. They would have always seen that
that in their sales, they used to minus raw material and they used to minus wages. If I clearly remember, they would have learned like that only, if I'm not wrong. बराबर कि नहीं उमेश? You would have learned like sales में से सर हमने रॉ मटेरियल माइनस किया, उसके बाद हम माइनस करते थे वेजेस भी. यस फिर सर। हम वेजेस माइनस करने के बाद हमको जीपी मिलता था. उसके बाद हम करते थे सैलरीज और बाकी सब चीजें. आज क्यों वेजेस किधर चले गए सर? ये जो फॉर्मेट निकला है ना, ये एक्चुअली कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से निकला है फॉर्मेट. मैंने नहीं निकाला है, ये फॉर्मेट एनुअल रिपोर्ट से निकला है. तो उसके लिए तुम्हारा ये हमने एक टिकर करके है, वो हम बाई कर रहे हैं. तो the format has been removed from this sticker app itself, and look at it, that you are getting a raw material and you are just now getting employee cost because the companies decided that बस wages हो या salaries देनी हो किसी भी ऑफिसर को, है तो हमारे लिए खर्चा ही ना एम्प्लॉय कॉस्ट का. भले वेजेस मेरा डायरेक्ट कॉस्ट होगा, तो वो जिसको मेरे एनालिसिस करनी है वो कर लेगा, उसको जैसे चाहिए वो करेगा. लेकिन यहाँ पर तो मेरे लिए तो ये खर्चा ही है सर. मैं कैसे इसको बताऊं? मेरे लिए तो ये एक्सपेंडिचर है. तो लुक एट इट ओवर हियर, अदर एम्प्लॉय कॉस्ट और ग्रेचुटी पेड और वीआरएस कंपेंसेशन और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस. अब तुम बोलोगे सर मतलब कंपनी कभी ग्रेचुटी देती नहीं, कोई रिटायर नहीं हो रहा है कंपनी से? नो, दे हैव सम काइंड ऑफ एन इंश्योरेंस दैट दे टेक, एंड फ्रॉम दैट दे माइट बी गिविंग. इट्स नॉट लाइक दैट दे आर नॉट गिविंग. But if this amount which is going away from them or other employee cost, how is it minus, sir? It means that they have been able to recover money from them. They have been able to recover. So their net employee cost, so the total payment to employee is 2644 on 14,000 ka sales pay, which means 18% is their employee expense. Now, if 18% is my employee expense, then I need to understand that, okay, what I need to do, which is it a required expenditure or is it an expenditure which I could have done? For example, most of the pharma company mein, why they have to give so much amount to their employee? Because most of the pharma company have two main expenditure. One is the R&D expenditure, and which you will see in their balance sheet. The research and development expenditure is huge. Huge means absolutely huge. So their research and development expenditure goes into tons of money because that's the only thing that they can do. And that is why if you see over here, you'll see a lot of research and development expenditure in the balance sheet you may see. And the other expenditure that they go through is the expenditure of their employees because they need to recruit a lot of MR. I don't know how many of you understand MR? MR, medical representatives. मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब इन शॉर्ट क्या बोलते हैं उसको? सेल्समैन ही बोलते हैं ना, बराबर ना सत्यम? मेडिकल का सेल्स काइंड ऑफ, वो मतलब जगह जगह जाते विजिट करते हैं. यस, वो डॉक्टर के पास जाके उनको देना पड़ता है, दवाई का प्रिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ता है कि हमने क्या दवाई लॉन्च की है. तो ये एमआर होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, जो दवाई देते हैं. अब द थिंग इज दे रिक्रूट लॉट ऑफ देम, दे रिक्रूट इन बल्क because they know, and they recruit left, right, and center. They don't even see that whether that employee cost is that employee is, because I know one of my BCom student who has become the star of Sun Pharma ka MR. He's not even a B Pharma. He's a BCom student, but he knew how to sell goods, and today he is doing wonders in Sun Pharma. He used to be with Ranbaxy. Ranbaxy then got took over by Sun Pharma. So I know him very well, and he is there. And you know how these pharmaceutical companies give under the table to doctors, but that's a separate thing. We don't need to discuss on that, on something which I am recording. I'll not say on that anything. I'll delete it. But understand the concept of the things that when employee cost is rising, and can there be an AI to replace this MR? Can there be an AI to replace the AI or to replace the MR or the salesperson? There won't be. AI हो सकता है, कोई रोबोट जाके बेचेगा तो कोई खरीदेगा? How comfortable will a human being will be to speak with an robot? The robot doctor can be there, but a robot will come and sell to the doctor. Will it be possible? Highly impossible. I mean,
एटलीस्ट द नेक्स्ट 50 years तो शायद से कोई नहीं करेगा, मे बी 50 years के बाद कोई अलग जनरेशन होगा, वो शायद से एक्सेप्ट कर भी ले, दैट द पर्सन कैन एक्सेप्ट इट ऑल्सो। बट राइट नाउ 50 years तक तो मुझे नहीं लगता कि एआई या रोबोट आएगा और माल बेचेगा तो लोग खरीद लेंगे, नहीं होगा वैसा। So how do we go ahead? How do we understand? And why am I talking a lot on payment to employees? But because this is one aspect of doing. Similarly, there are many other aspects. Let me take one of the aspect of which for which today's session was kept was a very important concept which I wanted to do was, सुना है ये CCC? Have you all ever heard about a concept called as CCC? तो दो सी होता है ना, उतना ही पता, तीन। कैश कन्वर्जन उसी, साइकिल। हाँ, हाँ समझ। कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है ये कैश कन्वर्जन साइकिल? सर मतलब ऑपरेशन में, मतलब रोलिंग मेरा कितना होता है, मतलब माल जब बिकता है तो पूरा एक हम्म, राउंड मतलब जो कंप्लीट होता है ना वो। वो भी एक है, लेकिन अगर तुम्हारी बैलेंस शीट पे तुमको कुछ चीजें दिखती है, फॉर एग्जांपल सीसीसी, व्हाट यू आर सेइंग इज आल्सो करेक्ट कि कितना हम्म, रोलिंग हुआ है सर, लेकिन मेरा जो बोलना है, जब मैं रेशियोज को देखकर कैसे समझूं? फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हारे पास 5 कंपनी लगा के रख दी, हम्म, और मेरे को चाहिए कि इनकी कैश कन्वर्जन साइकिल बताओ भाई, क्या चल रहा है इनकी कैश कन्वर्जन साइकिल, as based on their sales, how is it going on the based on their sales, how is it? बट हम्म, पहले तो ये पता चलना चाहिए ना कि व्हाट इज कैश कन्वर्जन साइकिल। तो कैश कन्वर्जन साइकिल होता है ट्रेड रिसीवेबल्स, हम्म। ट्रेड रिसीवेबल्स जिसके कुछ टर्म्स में एआर भी आता है, एवरेज रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, add to that is something we call it as cash and cash equivalents, तो सबसे जल्दी cash and cash एफएमसीजी equi, कंपनी को था। हाँ ऑलवेज, मोस्टली तो इट इज क्यूएसआर। सबसे अच्छा अगर क्या सीसीसी देखना है तो क्यूएसआर, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स लाइक जुबिलेंट फूड वर्क्स, जुबिलेंट फूडवर्क्स। हम्म, बारबेक्यू नेशन, क्योंकि वो कभी उधारी पे काम ही नहीं करते हैं, हम्म, उनका उधारी पे काम नहीं होता है, उनका सारा काम कैश पे होता है ना। लेकिन सवाल कैश का नहीं है ना, कैश कन्वर्जन साइकिल मेरा जो रेशियोज के तरफ से कैलकुलेशन है इज वेरी डिफरेंट, इट इज नॉट दैट, what do you do with that cash, do you keep on investing and make money out of it or not? ये है कैश कन्वर्जन साइकिल वेर इन वी डूइंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लेस ट्रेड पेएबल्स। और व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल? बेसिकली इट इज योर डेटर्स, इन सिंपल वर्ड्स, तुमको जिससे पैसा लेना है उसको हम डेटर्स बोलते हैं, इसके लिए ट्रेड रिसीवेबल है। और दूसरी वर्ड में बोलूं, इन द टर्म्स ऑफ सत्यम, सत्यम ने मतलब सत्यम गिव्स मनी ऑन interest pay, correct? You play it on interest and you take हम्म, some kind of security from people, correct Satyam? yes, आप इंटरेस्ट पे पैसा घुमा रहे हो और उनसे कुछ हाँ, सिक्योरिटी लेते हो। लेकिन अभी मान लो मेरे पास, मैंने किसी पर्सन को, लेट से ओमकार को, मैंने कुछ माल बेचा है। अब माल तो मैं ऐसे तो नहीं बेचूंगा, मैं उसके पास से जाके कुछ बिलिंग तो करूंगा ना माल बेचने का, हाँ, राइट और रॉन्ग? वो बिलिंग करूंगा कि नहीं करूंगा? और मैं क्या बोलता हूँ कि ये बिल जो मेरे पास पड़ा है वो मैं तुम्हारे पास आके तुमको देता हूँ, बोलता हूँ कि मैं नहीं कलेक्ट करूंगा पैसा, तो आज मेरे को दे दो सत्यम भाई, ये हम्म, बिल बना है 1 करोड़ का, एक काम करो हम्म, ना यार, मेरे को तुम 95 lakhs दे दो, 5 लाख तुम्हारा, तुम 3 महीने के बाद जाके या 2 महीने के बाद जाके ओमकार से पैसा वसूल कर लेना। हम्म, इज इट पॉसिबल? होता है क्या ऐसा? हाँ, हाँ, होता है? उमेश, हाँ। सुना कि नहीं सुना मैंने जो बोला? बोलते हैं सर, बटाव काटते हैं लोग उसको, बोलते क्या बोला हाँ उसको सर। तुम सत्य? हैं क्या वटाव बोलते हैं उसे? काटते हैं। मतलब बिजनेस लैंग्वेज में वटाव काटते हैं, ऐसा मतलब। हाँ, वटाओ काट के, वो तो हिंदी वर्ड है, वो गांव का वर्ड है। होता है, उसे बोलते हैं हम बिल डिस्काउंटिंग या इनवॉइसिंग, इनवॉइस। इनवॉइस हाँ, इनवॉइस। डिस्काउंटिंग। हाँ, हम बराबर। उसको इनवॉइस डिस्काउंटिंग बोल देते हैं, या यू कैन कॉल इट एज इनवॉइस फाइनेंसिंग ऑल्सो। सो हम्म, इनवॉइस फाइनेंसिंग भी बोल सकते हो, इनवॉइस डिस्काउंटिंग भी बोल सकते हो, और दूसरा वे इट इज कॉल्ड एज फैक्टरिंग ऑल्सो।
where you give it to somebody else. Let's say I go to Satyam and I give it to Satyam. Satyam may transfer it to somebody else and take money. So that's called as invoice financing. Basic term is actually invoice financing. तो did you play the money or not? What are you doing with this? अगर तुम ट्रेड रिसीवेबल्स को इतने टाइम तक अपने बैलेंस शीट पे रखे हो तो क्यों इसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसका नाम है सन फार्मा. आई एम जस्ट अज्यूमिंग, आई डोंट हैव द एक्चुअल अमाउंट राइट नाउ. So let's say that their trade receivables is 500. Their cash and cash equivalents is, let's say, 1000, and they have a kind of trade payable of 250. So what would be their total? Can I say their total is coming to 1250? The total of their cash conversion CCC is 1250. But does it give me any indication? Does it give me any understanding? The answer is no, sir. इससे मुझे पता क्या चल रहा है? सर कुछ पता नहीं चल रहा है इससे. तो इसी को हम बोलते हैं परसेंट ऑफ टीआर और परसेंट ऑफ ट्रिपल सी ऑफ सेल्स. तो अब अगर तुम देखोगे तो तुम एटलीस्ट कुछ इट विल मेक सम सेंस टू यू के 1250 divided by 14,401 multiplied by, when I do 100 multiplied by 100, what is the percentage of my triple C? What is my percentage of triple C over here? This 1250 as a standalone was not making any sense. But the same 1250, when it became a percentage, it makes some sense to you. It will make you some understanding. Ki 1250 divided by 14, 14111, it means 8.6% of my finance I am having. 8.6% of finance. मेरे पास है. 8.6% of my money is there with me to cash financing, cash conversion cycle में है. Similarly, अब कैश कन्वर्जन साइकिल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना देख के मैं ये देखता हूँ कि ये तो था सन फार्मा का. I'll try to check for Sun Pharma. If this is of Sun Pharma, now let's understand that the triple C of Cipla for 2024, triple C for Cipla is 3560 on a revenue turnover of 18,150. So what is the percentage of this now? Percentage of triple C to sales or to revenue, whatever you say it as. 3560 by 18150 multiplied by 100. How much is it coming to? How much 19.61. is it? 19.61 Six one. or 62, whatever you say. Okay. Now there can be another method also. Some people might say that, sir, we do not give. Now, what does it mean that there could be somebody who might call this way also that चलो ये तो कैश कन्वर्जन साइकिल में आपने ट्रेड पेबल्स को माइनस कर दिया. सर एक और चीज से देखते हैं कि हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स है. ट्रेड रिसीवेबल्स, let's understand the trade receivables of Sun Pharma, which I gave was how much to you all? I gave to you all 500. Okay, trade receivable Sun Pharma 500. Their revenue was what's the percentage of trade receivables? Percent of trade receivables to revenue. How much it will be? Any calculations if you can give? It will be helping me out to make you all understand. 500 by 1441.
3.4%. Okay, 3.4%. 3.4%. Now, doing this cash conversion is very good. Means I go and do this invoice financing is very good. It's excellent. It's very great. But does every company will like it? For example, Omkar has been my customer for so many years. And one fine day, I give it to, let's say, Satyam to do the invoice financing. Will every company like it? कल को सर सत्यम डिपेंड ने करता है कुछ बिजनेस का नेचर क्या है। हाँ बट अगर तो सत्यम ने सपोज मान लेते कि जैसे हमारे कॉलेज में एक बात चल रही है एंड आई विल बी वेरी फ्रैंक एंड ओपन व्हिच आई ऑलवेज डू। हमारे कॉलेज में ये बात चल रही है दैट क्योंकि बच्चे लोग बहुत सारे आके बोल रहे हैं कि सर फीस बहुत तकलीफ हो रहा है पे करना। हम लोग को बैंक लोन नहीं दे रहा है। आई मीन स्वस्तिक है नहीं यहाँ पे लोन नहीं दे रहा है बैंक। हम लोग क्या करें तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे वी वर डिसाइडिंग दैट why don't we open up we have something called as a Grey Quest which is there in my college they have been behind the college for past 2 years। हाँ हाँ, पता है सर। मुझे नहीं पता रिक्वेस्ट कितने लोगों को पता है बच्चों को पता है कि नहीं पता है। तो फर्स्ट सर वो असाइनमेंट था ना हम लोग का, उसमें हम लोग ने ग्रेट वेस्ट की कंपनी चूज किया था। वो लोन प्रोवाइड करते हैं ना एजुकेशन के। हाँ हम्म, तो ग्रेक्वेस्ट के साथ हमारा टाइप होने वाला था। अब हमारे लिए क्या प्रॉब्लम था कि वो जाकर अगर मेरे कस्टमर बिकॉज आई डोंट ट्रीट माई स्टूडेंट एज माई कस्टमर and I can't say that you all are my customer, you all are my students. And if one fine day you go, kind of a Grey Quest comes and give you something. Fees should never be a constraint for any student's education. That is what our motto is in our college. That is, from day one, our management is very clear. Fees should not be a constraint for any students, or we should not stop for fees any student from not doing it. If any student is coming, he has a problem, we'll sort out. We'll ब्रिंग सम सोल्यूशन। बट फीस की वजह से उसका एजुकेशन रोक देना ये अच्छी बात नहीं है। बट मान लेते हैं कि हमने कर लिया हमने ग्रेक्वेस्ट के पास गए क्योंकि कॉलेज ये बोलता है कि there's टू मच ऑफ ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर बीइंग डन। फॉर एग्जाम्पल टू रिमूव अ फीस हमारी कॉलेज को एक एम्प्लॉय को रखना पड़ रहा है। वो एम्प्लॉय एवरीडे कॉल करेगी जैसे तुम लोगों को बार बार आता है वो मैडम का कॉल। राइट राइट नो। अब तुम्हारे लिए भी वो इरिटेशन है हमारे लिए भी वो इरिटेशन है कि एवरी टाइम हमारा एक एम्प्लॉय द टाइम इज पेंडिंग। तो हमने बोल दिया मैनेजमेंट ने बोले ये सब चीजें करने से अच्छा एक काम करो दो एम्प्लॉय को निकाल देते ग्रेक्वेस्ट से हम टाई अप कर लेते ग्रेक्वेस्ट कर लेगा काम हमको तो फीस अपफ्रंट मिल जाएगी। मतलब अगर 40 बच्चे हैं 30 बच्चों ने ग्रेक्वेस्ट पे गए तो हमको तो अपफ्रंट फीस मिल जाएगी ना। हमारे लिए क्या टेंशन है। सॉर्टेड ना बिकॉज हमको तो 2 दिन में पैसा आ जाएगा। 30 बच्चे 2 लाख 60 लाख रुपया मैनेजमेंट को आ जाएगा। मतलब मैनेजमेंट का जो इंटरेस्ट का पैसा है वो बच गया। मैनेजमेंट ये बोलेगा और तुम्हारे लिए ये फायदा है कि बिना गिविंग एनी डॉक्यूमेंटेशन योर लोन इज डन। यू कैन कीप ऑन गिविंग मंथली। और उसमें इतना भी नहीं है इतना हैवी इंटरेस्ट नहीं लगाते वो। उनका इंटरेस्ट रेट इज बेसिक ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन। दे माइट चार्ज यू फ्रॉम 4% to 6% के बीच में। बट ओनली प्रॉब्लम दैट वी फेस इज दैट व्हाट इफ these people talk with you in a foul word or they are not that great words that they use and there we lose your credibility. So that is why but same thing if at all now the same comparison if I take this trade receivable only I say that Cipla ka trade receivables was somewhere around 1600 on a turnover of a revenue of 18150 18150. What's the problem over here? Percentage of trade receivables देखो trade receivables to revenue will be equal to 1600 divided by 18150 multiplied by 100. How much will it come to? Nearly 9.6, 8 point something, 8.8, 8.8%. 8.8%. Now, what will be your brain saying on this when you look at this? When you look at this, what would your interpretation will be? As I said, ratios may you can keep on doing each and every ratios, as many ratios yes you can find out, breaking up the cost. For example, there can be one another. Now, this
part is the most important, where you interpret that the amount of conversion into invoice financing of Sun Pharma is better than Cipla, as their amount stuck in receivables is only 3.4%, whereas whereas of Cipla is 8.8%. Means a company can say, because this would invariably or in short increase your cash conversion time. This could lead to your employee cost increasing, क्योंकि ये 3.4% है, मतलब वो शायद से ये करता रहेगा कि अपने इनवॉइस को बेच के कैश में कन्वर्ट करता होगा, वेरेज ये नहीं कर रहा है, ये 8.8% पे ही है। और उसका मतलब इसके पास एम्प्लॉय जो बार बार कॉलिंग करेंगे, ये आपका टाइम जाएगा, विच मीन्स प्रोडक्टिविटी आवर्स चले गए। This is what interpretation of cash conversion cycle is all about. This is what you will do is your division. This is what you will understand from what is happening. Am I clear? समझा कि बाउंसर गया?